Good morning. I am Lalwadi Yadav. Today we are studying Gauss Theorem. Okay. So this is Gauss Theorem. It states that the electric flux through any closed surface, electric flux phi E through any closed surface is equal to is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge Q enclosed by the surface that is phi E equal to 1 upon integral of over closed surface vector E dot vector ds equal to 1 upon epsilon naught times of total charge Q. Okay, where epsilon naught is permittivity of free space. Where epsilon naught is the permittivity of free space. ओके, प्रूफ देखिए, प्रूफ ये देख लीजिए, कोई जो कि आपका गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पर आप एक थोड़ी सी एरिया ले लिया और ये चार्ज है आपका, इससे इनक्लोज चार्ज यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए आपका है ये चार्ज Q, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये, और एरिया वेक्टर आपका ये है ds। इन दोनों के बीच के एंगल ए थीटा है। ये पॉइंट O पर कोई चार्ज नेट चार्ज Q है प्लस, और पूरी की पूरी सरफेस की एरिया ले लीजिए, ये है यस। ओके,
Therefore, let us consider a point charge plus q. Let us consider point charge plus q situated at O at O inside a closed surface inside a closed surface. Yes, ये पॉइंट P ले लीजिए तो ये डिस्टेंस R हो जाएगी. As figure, let dA be the ds be the small area. Let ds be the small area of the surface at point P. Small area around P on the surface let OP is R. Let OP equal to small r. Then electric flux through the area element ds electric flux through the area element ds d phi e equal to vector e dot vector ds is equal to e ds cos theta. If theta is equal to 0 degree, then cos 0 is equal to 1. So d phi e is equal to vector e dot vector ds equal to e into ds. Total electric flux enclose the surface
Yeah, but E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge q by r square. So total electric flux through the Gaussian surface phi E equal to integral of over closed surface vector E dot vector ds equal to E into integral of over closed surface ds equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge q by r square integral of over closed surface ds phi E. According to Gauss theorem, okay, but integral of over closed surface ds equal to 4 pi r square. Putting this value in above equation, phi E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square into 4 pi r square. 4 pi r स्क्वायर देखिए 4 पाई यहाँ कैंसिल r स्क्वायर इससे कैंसिल सो phi E equal to 1 upon epsilon naught into charge q. This is Gauss theorem. Okay. This is Gauss theorem. Next point, important point. Note. Number 1. If electric flux is inward, point 1. If electric flux inward if electric flux inward ठीक through the surface then electric flux is negative. If electric flux inward, then it is negative. Okay. If electric flux outward of the surface, second point, if electric flux
Electric flux outward through the surface then it is positive. अगर किसी सरफेस में इंटर्ड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नेगेटिव होगा, और उस सरफेस से आउट ऑफ होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक। जैसे ये कोई आपका गॉसियन सरफेस है, चार्ज आपका यहाँ है, क्यों? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से इनवर्ड करेगा, इस सरफेस पर वो इनवर्ड करेगा। ठीक। और इसके बाद ये आगे जा कर के यहाँ से आउटवर्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो हो जाएगा, यानी इस सरफेस से वो आउटवर्ड करेगा। यानी यहाँ देखिए, इस सरफेस पर इनवर्ड हो रहा है, यहाँ पर आउटवर्ड हो रहा है, तो इस तरह से इनवर्ड नेगेटिव होगा, आउटवर्ड पॉजिटिव होगा, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। If it is clear that next point 3 है, if charge Q be outside the closed surface, yes, closed surface, yes, then net electric flux through the surface the net electric flux through the surface is जीरो, क्योंकि इनवर्ड नेगेटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। ओके। आगे है गॉसियन सरफेस। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? Gaussian surface a Gaussian surface is an arbitrary is an arbitrary closed surface arbitrary closed surface
in three-dimensional space. Three-dimensional space through which flux of vector vector field is calculated. Okay, thanks.